नमस्कार, मैं एडवोकेट अभिषेक रंजन सिंह। पांचवें केस के हम बढ़ रहे हैं, दविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे पहले आपने देखा, हमने धर्मवीर सिंह को पढ़ा, सुखविंदर सिंह, राम अवतार, केजीएस भुट्टर, और आज हम दविंदर सिंह पढ़ रहे हैं। जो डिसेबिलिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस है उनके उसमें हम हाफ वे आ गए हैं, और कुछ टर्म्स अब आपको क्लियर होंगे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो द कोर्ट्स ऑल्सो स्टार्ट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो वो एरियर्स की बात होगी। नो, डिसेबिलिटी तो आपको मिल गया। नाउ व्हेन यू गो डीपर इनटू लॉ, नाउ व्हाट यू विल सी दैट जो परत दर परत हम लाइनों को पढ़ते रहते हैं तो पता चलता है कि फिर एरियर्स आया जब डिसेबिलिटी मिल गया, नॉन एग्रीवेटेड बाय, एट्रीब्यूटेबल टू, राउंडेड ऑफ, और जो आपका कट ऑफ डेट है 1996 का, उसने बहुत से इश्यूज क्रिएट किए। जो लेटर 2001 में आया, ब्रॉड बैंडिंग हुआ, 50 को 75%, 25 को 50%, इस तरीके से। एंड सपोज किसी को डिसेबिलिटी पेंशन मिला, बट उन्होंने अप्लाई किया जब तो उनको मना कर दिया गया। देन ही वेंट टू द कोर्ट, बट एक लिमिटेशन दे दी गई कि जिस दिन आपने केस किया उससे 3 साल पहले तक का आपको सारा एरियर मिलेगा, उससे पहले का नहीं मिलेगा। नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूइंग रॉन्ग। जो पेंशन है वो आपकी प्रॉपर्टी की तरह है। तो अगर ऐसा नहीं है कि 1 महीने मिला, 1 महीने नहीं दिया तो उस महीने का कुछ नहीं है। तो इट हैज बीन इट इज योर प्रॉपर्टी, जिसका एक कंटिन्यूअस रूप होता है। इसीलिए पेंशन एज अ प्रॉपर्टी भी कंसिडर होगा। उसमें लिखा भी है, जजमेंट में भी आया कि द प्रिंसिपल दैट पेंशन इज अ वेस्टेड एनफोर्सिबल राइट इन द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, नॉट अ बाउंटी, एंड कैन नॉट बी कर्टेल आर्बिट्रली। तो आप जब समझ रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है तो एक क्लैरिटी देना जरूरी था। नाउ इन दिस केस ऑफ दाविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी क्लैरिटी मिली 2006 में। नाउ ही अप्रोच्ड द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, he was granted that his disability pension was granted, and but that the limitation of 3 years was put in, where last 3 years of arrears will be given, not the whole period. Now it is a tricky situation. Now I'll say a thing about it कि जब चीजें 20 साल से चल रही है और आपने केस किया, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर, एंड कोर्ट सेड ओके आई विल गिव यू, बट लास्ट 3 साल के कहूंगा क्योंकि आप मेरे पास लेट आए हो। नाउ दैट इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू डिसेबिलिटी पेंशन। इट इज द कंटिन्यूअस रॉन्ग which has been done to that individual. जो ब्रॉड बैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया 2001 में, मेकिंग अ डेट 1996 एट द कट ऑफ डेट, तो थोड़ा सा अनफेयर लगा। नाउ इन दिस दविंदर सिंह केस, व्हाट द petitioner says, having been held entitled to rounding out with effect from 1 January 1996, the appellant was entitled to arrears from the date, and tribunal erred in capping the arrears at 3 years prior to the filing of the case. Like I said कि जिस दिन आपने केस फाइल किया उसके previous 3 years तक आपको arrear मिलेगा। Now this is very important. Disability pension is a recurring right, and its arrears cannot be treated as stale, one-time claim, defeated by delay or / limitation. The beneficial broadbanding scheme must be given full effect. Now, here the broadbanding effect should be given full effect in case of the disability pension. So it is a recurring right. It is a continuous right. Now, the next is what the Davinder Singh said. The position was settled by Jai Singh versus Union of India and the Bhuttar Ram Avatar line, under which pre-1996 retirees received the benefit from 1996 with interest of 8%, and there was no basis to truncate the appellant's arrears. So the argument was कि it is a well established principle in a case by Jai Singh versus Union of India and this KGS Bhuttar case that it is a clear that under which the pre 1996 retiree received the benefit from the same as 1996 after that. Now what the Union of India said, the tribunal's restriction of arrears to 3 years prior to the filing of the
application was justified, consistent with the general limitation principle applied to monetary claims. Now what Union of India said, एक limitation का जो limitation act है, limitation का कानून है कि जब monetary चीजें होती है तो there is certain limitation to it, और उसको हम मान रहे हैं, इसीलिए हमने 3 ईयर का इनको दिया. The appellant having approached the tribunal belatedly could not claim arrears for the entire period back to January 1996. Delay and lashes limited to recoverable arrears. Now यूनियन ऑफ इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई लिमिटेशन हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से हम आपको पेंशन देंगे. Now what the judgment said, and judgment is very short, इसमें मैंने पहले ही कहा था कि जो एरियर्स हैं उसके बारे में बात हो रही है. Now the judgment said the appellant was confined to the tribunal's decision in its order dated 4th November 2001, limiting arrears to 3 years prior to the filing of the application. The entitlement to rounding off with effect from 1996 being undisputed. So that was clear. Following its earlier view in Jaising versus Union of India, under which all pre-1996 retirees are entitled to the broadbanding benefit from 1st January 1996 with interest of 8% per annum, the court held that the appellant was likewise entitled to arrears from 1st January 1996 and in the general formulation applied across the line from the date of retirement, whichever is later, and that 3-year cap could not stand. The practical effect was to direct payment to the appellant's broad-banded disability pension arrears from 1st January 1996 without the artificial 3 years limitation imposed by the tribunal. So जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट किया था, उसको इस जजमेंट ने हटा दिया. सो एज आई सेड, the disability pension is a recurring and a continuous right. It is not a one time claim. उस एरियर के जो लिमिटेशन था 3 इयर्स को इस जजमेंट में हटा दिया गया. आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है. एंड डिसेबिलिटी आप का अधिकार है, क्योंकि आपने देश की सेवा की है उस कठिन परिस्थिति में. तो कोर्ट्स आल्सो टेक अ लिबरल व्यू इन दीज केसेस. So as you move forward, you will see the broad aspect of military jurisprudence, where the disabled soldier is given all his dues without questioning as much as a statute wants that, because every individual is in different situation, different conditions. He serves at a high altitude, in deserts, in oceans, and he deserves all those rights and protection from the Union of India, from the government, from the armed forces, so that his life becomes easier if something unforeseeable like disability happens to him. So you have to go sometimes by rule book. The people deciding all these are also humans, and as we move forward, we will be better able to appreciate the nitty-gritties of the disability jurisprudence in military law. तो होता क्या था कि कई बार लोगों ने गलत फायदा भी उठाने की कोशिश की इन चीजों की, इन प्रावधानों की. तो उन्हीं से बचने के लिए जो अब डेप्थ में जाते हैं, ताकि उनको वो हक ना मिल जाए जो वो डिजर्व नहीं करते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा सहायता देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट बिकॉज इट्स अ लार्ज आर्मी, आपको सबको साथ में लेके चलना है, तो देयर माइट बी फ्यू चांसेस, देयर आर केसेस जहां जो बहुत सालों तक चलते हैं, बट एक लीनियंट लिबरल व्यू जो है वो लिया जाता है. जैसे अब इसमें एक आर्टिफिशियल बैरियर क्रिएट किया गया, बिकॉज एज पर दी स्टैट्यूट मॉनेटरी जो कंपोनेंट है वो 3 ईयर तक रहेगा, बट उसको हटा दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है. तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, कोर्ट्स भी सीखते हैं, इंडिविजुअल भी सीखता है, लॉयर्स भी सीखते हैं, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं. तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ केस नंबर 5. आई होप यू लाइक दिस. जय हिंद.